Dhillon, if I may, how do you explain this sudden spike in these targeted killings and the victims of these killings, sir? Good evening, Gaurav, and good evening to all the viewers. The recent spike in the targeted killings of people from outside the Valley of Kashmir is nothing but a very well articulated design by Pakistan. As you know, this targeted killings, or the spike as you call it, has happened in the last about 3 to 4 weeks, and those 3 to 4 weeks also coincide with what's happening internally in Pakistan. And after Mr. Imran Khan's exit and the new government which has been brought in, now they are facing major economic problems within. Now, to divert the attention from the economic instability and the price rise and the inflation and the political infighting which is happening inside Pakistan, they always fall back on Kashmir. So this is one aspect which is showing up in Kashmir, as but also even after the terrorists abrogation who are on the run and the security forces. Even after the abrogation of Article 370, how is it so easy for Pakistan to turn on and turn off the terror tap? But Tawseef Raina, क्या ये माने कि 1990 वो जो 90 का दशक है एक बार फिर वो वापस आ गया है कश्मीर घाटी में कि हिंदुओं को फिर निशाना बनाया जा रहा है, या जो लोकल नहीं है उनको निशाना बनाया जा रहा है, या जो तिरंगे का सम्मान करते हैं कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी भाई, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है? बेसिकली जो मेरा मानना है, ये जो यहाँ पे एक अमन की शुरुआत हुई थी जम्मू कश्मीर में, ये जो डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी जम्मू कश्मीर में, ये जो लोगों का एंगेज होना शुरुआत हुआ था जम्मू कश्मीर में, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी जम्मू कश्मीर में, इसको देख के हमारे दुश्मनों में फ्रस्ट्रेशन आई है। और ये चीज कोशिश में है, हम 90 से देख रहे हैं, जब भी कश्मीरी चाहता है अमन की ओर आना, जब भी कश्मीरी भाईचारे की बात करता है, तो उनसे ये गवारा नहीं होता है, तो ये किलिंग स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से राहुल भट्ट साहब की किलिंग्स हुई, और जिस तरह से आज हमारे शोपियान में एक हमारे बैंक एम्प्लॉय को शहीद किया गया, ये सीधी बात हमें समझ आती है, फ्रस्ट्रेशन है। और इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है, ये यहाँ पे देखना नहीं चाहते अमन, यहाँ पे देखना नहीं चाहते डेवलपमेंट, ये हमारे यूथ के दुश्मन है, ये हमारे नौजवानों को पढ़ते हुए बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। नहीं, लेकिन क्या ये पाकिस्तानी कर रहे हैं कि कश्मीर में भी कुछ ऐसे अमन के दुश्मन बैठे हुए हैं कि ऑर्डर चाहे पाकिस्तान से आए या चाहे लोकल ऑर्डर आए, कर ये कश्मीरी लोग ही रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जनरल डिलन, इज दिस एक्चुअली अ चिलिंग मैसेज टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह? द किलिंग ऑफ विजय कुमार, could it actually be linked to reports that he was seeking a domicile certificate, or the killing of Rahul Bhatt, who was working in the revenue office in Chidura, both very crucial to this Naya Kashmir plan? They are being singled out and they are being killed. See, these killings which are happening recently is actually, as my co-panelist Mr. Tawseef Raina has just clarified, is a frustration on part of our enemies who are not wanting the peace to return to Kashmir. After the abrogation of Article 370 in August of 2019, the peace, the development was happening, the infrastructure was coming in, a lot of educational facilities were coming up, the job opportunities were being created, and the Kashmiri Hindus were feeling secure working in Kashmir in the government organizations, or like we saw today in the banks and even in the remote places, in schools and other places. Now, this was not acceptable to Pakistan. They do not want Kashmiri society to be peaceful and progressive. They want Kashmir to remain in turmoil. They want Kashmiris to get killed. They want non-Kashmiris not to be in Kashmir, and because that serves their agenda. That serves the agenda of disturbances in Kashmir, as also keeping the Kashmir issue alive in the international press and the media. So it is the peace and prosperity which was coming in after 370 because of the central government's initiative, the UT government's
very aggressive push to the peace initiatives and infrastructure development.